This is an ABP Life podcast. Hello everyone, it's me, your newsman Rudrashish Kanjilal, and with great pleasure, I inform you that Clear Cut has completed its 100th episode today. Yes, clap, 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 clap. I mean, this show was my brainchild where I wanted to address everything from social issues to political issues and everything in between. And today morning, when I realized that I'm going to be making the 100th episode of Clear Cut today, मेरे लिए तो भाई दुनिया हिल गई. And honestly, today midnight the world around me was literally shaking. I don't know if it's for the excitement of Clear Cut or not, but really, the world was shaking. What a great segue to get into today's topic. Well, early on Wednesday, a 6.3 magnitude earthquake that shook the Himalayan region close to Pithoragarh in Uttarakhand along the Nepal border caused severe tremors to be felt throughout North India. The earthquake occurred at 1:57 a.m. on Wednesday in Nepal, roughly 90 kilometers east-southeast of Pithoragarh in Uttarakhand, according to the National Center for Seismology. People were awakened from their sleep by the tremors that were felt in Lucknow, Ghaziabad, and the nearby places, including Noida, where I live, by the way. Delhi was shook by the events of that night. After a 6.3 magnitude earthquake hit Nepal, there were significant tremors felt in the capital city and the surrounding area around 2 a.m. They lasted for roughly 10 seconds, which caused many people to quickly leave their homes. Because of its location in a seismically active area, the national capital region would be severely damaged by a major earthquake that would cause buildings to fall, among other things. So is this a warning signal for the Delhi NCR region? And what impact does the climate have in natural disasters like earthquake? So let's decode all of this today. So hello and welcome to the 100th episode of Clear Cut only on ABP Live podcast. This is your newsman Rudrashish, and today let's talk about earthquakes. So on Wednesday at 1:57 a.m., Nepal experienced its third earthquake in 5 hours. The National Center for Seismology reports that the first earthquake, measuring 4.9 magnitude, occurred on Tuesday at 8:52 p.m. and the second, measuring 3.5 magnitude, at 9:41 p.m. The third earthquake, measuring 6.3 on the Richter scale, occurred at 1:57 a.m. and the Delhi NCR region felt its aftershocks. However, there have been other earthquakes in the Delhi NCR region as well. The National Seismological Network has counted 745 earthquakes between September 2017 and August 2020, including 26 earthquakes of Richter magnitude 3 or higher in the national capital region. At least 5 tremors occurred in the Delhi NCR area in 2021 as a result of aftershocks or low-intensity earthquakes. But the reason Delhi is so susceptible to tremors is now a big question. The nation's capital and the nearby cities are located in a seismically active area. Based on the macro-seismic zoning map of India, the Bureau of India Standards has divided the nation into 4 primary zones. From Zone 5, which is high intensity, to Zone 2, which is low intensity. Northern Uttar Pradesh and parts of Delhi are classified as Zone 4, the most serious category. Now the Sona fault line, the Delhi-Moradabad fault line, and the Mathura fault line are 3 seismic fault lines that are close to Delhi. Gurgaon is the most dangerous area in Delhi NCR since it is situated on 7 fault lines. Now, according to the research, if these fault lines become active, a 7.5 magnitude earthquake may occur. Can you imagine? A 7.5 magnitude earthquake. Now, various experts in earthquake engineering have claimed that earthquake centers are altering due to environmental changes. The tectonic plates are changing. Now, Delhi lies close to the Himalayas, which were created by the collision of the Indian and the Eurasian tectonic plates.
Areas like Delhi, NCR, Kanpur and Lucknow are especially vulnerable to earthquakes because of changes in these plates. Although it is becoming more widely acknowledged that climate change is occurring, none of the recent earthquakes are most likely connected to it, according to the Straits Times analysis. Though the consequences would be fairly localized, certain scientific research suggests that climate change may have a minimal effect on geological events like earthquakes. The pressure of glaciers and permanent ice sheets on the bedrock in the polar regions have caused it to stretch downward. Like a slow, gigantic trampoline, the land bounces back when the ice melts, and the weight of the Earth's crust is freed. There may be earthquakes as a result of this rebounds effect on geological fault, but they will only occur in icy regions. Nevertheless, tectonic plate movement, which is a major contributor to strong earthquakes, is more important than the consequences. Looking back into the history of earthquakes in the Delhi NCR region, one of the most significant quakes that was registered in Delhi occurred more than 60 years ago. The capital was shaken on August 29, 1960 by an earthquake that had epicenter near the border of Delhi and Gurgaon. Cracks appeared in almost 75% of the nearby structures, while Red Fort and Rashtrapati Bhavan received reports of minor damage. 100 or more persons were hurt as a result of stampedes and fallen objects. Researchers eventually determined the magnitude to be 4.8, down from the initial estimate of a magnitude 6. Now you might be thinking that what would happen if an earthquake occurred today in Delhi NCR? According to reports, the NCR region is experiencing ongoing seismic activity that can cause significant earthquakes. High-rise private structures have become more prevalent in Delhi's border towns, many of which do not adhere to the obligatory earthquake-resistant construction standards mandated by the Bureau of Indian Standards. The numerous unauthorized settlements throughout the capital and the flimsy buildings along the Yamuna will not be able to resist a powerful earthquake. The majority of locations along the Yamuna and its floodplains, especially the densely populated neighborhoods of East Delhi, will be the worst hit if struck by a large earthquake. With 16 of the 115 installed seismometers in India, the region around Delhi has the most seismometers of any place in the nation. As a result, even earthquakes with little magnitudes are noted. Now, while talking to some common people today, I realized that almost everyone had a couple of questions regarding this earthquake. Like, can earthquake be predicted? Why are people witnessing frequent earthquakes lately? And what should people do who reside in high-rise buildings like skyscrapers, 20-25 floor buildings? What should they do when an earthquake occurs? To answer all these questions, we have Dr. Sumer Chopra, who's the Director General of Institute of Seismological Research in Gandhinagar, Gujarat. देखिए ऐसा है कि रिक्टर स्केल वो भूकंप को कितना तेज आया, ये रिक्टर एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने एक स्केल बनाया कि मापने के लिए कि आपको कैसा, तो ये जो स्केल है ये लॉगरिथमिक स्केल है. इसमें क्या हमें मेजर करते हैं जो एम्पलीट्यूड होते हैं वेव्स के, मतलब जैसे कोई भी वेव आती है तो उसका कितना एम्पलीट्यूड है, 1 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, 5, तो जितना बड़ा अर्थक्वेक होगा उतना बड़ा एम्पलीट्यूड होगा. तो वो एम्पलीट्यूड मेजर करके हम इसका एक फॉर्मूला है, उसमें फॉर्मूले में डालते हैं तो वो आपको रिक्टर मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं वो स्केल आएगा. अब जब ये रिक्टर ने जो ये बनाया था स्केल, ये कैलिफोर्निया रीजन के लिए बनाया था, बट अभी हम क्या है कि जो आप ये कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्टर मैग्नीट्यूड नहीं है एक्चुअल में, बट ये रिक्टर जो टर्म है इतनी कॉमन हो चुकी है सब जगह उसको रिक्टर में, बल्कि ये जो 6.3 मैग्नीट्यूड बताया गया है इसको हम बताते हैं मूवमेंट मैग्नीट्यूड. मूवमेंट मैग्नीट्यूड क्या है कि आजकल जो डिजिटल इक्विपमेंट आ गए, पहले तो एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी, डिजिटल जितना रिकॉर्ड आते हैं उसमें ये पूरा जो रिकॉर्डिंग होता है वेव्स का वो पूरा डिजिटल फॉर्मेट में होता है. डिजिटल में जितना मेजर करके हम टोटल एनर्जी निकालते हैं कि उस मतलब कि उस जगह पे जितना भी अर्थक्वेक आया था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वो चीज हम एरिया और डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट डालेंगे तो उसकी वजह से मूवमेंट मैग्नीट्यूड आएगा. अच्छा, जो रिक्टर मैग्नीट्यूड को देखा गया था कि वो जनरली 6.5-7 के ऊपर वो सैचुरेट होता था, मतलब उसके ऊपर आप कितना भी एम्पलीट्यूड मेजर करो वो आपका जो है वो 6-6.5 ही आएगा. बट ये मूवमेंट मैग्नीट्यूड है ये सैचुरेट नहीं होता, तो जितने भी बड़े अर्थक्वेक जनरली आते हैं उसका मूवमेंट मैग्नीट्यूड निकालते हैं. का अर्थक्वेक का उद्गम स्थान होता है भूकंप का,
वो लगभग 10 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर के बीच में होता है, धरती के बीच में, ठीक है। अच्छा, अभी आपने साइक्लोन की बात की, वेदर की बात की, तो आप जो जमीन के ऊपर है वहाँ आप सब चीज देख सकते हैं। वहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, डिफरेंट हाइट पे इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, बैलून में इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, आप एरोप्लेन में इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, सैटेलाइट में इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। तो आप पूरा जो मेजर कर सकते हैं कि चेंजेस, प्रेशर, टेम्परेचर, क्लाउड फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, चेंजेस क्या हो रहे हैं, कहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, ये आप चीजें एक्चुअली मेजर कर सकते हैं। अच्छा, जमीन के अंदर जब आप समझो 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर में कोई भूकंप आ रहा है, तो आप 25 किलोमीटर में आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है मेजर करने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। और जो डीपेस्ट बोरहोल जो अब तक दुनिया में किया गया है वो लगभग 10.5 किलोमीटर है, जो रशिया में किया है। उससे डीप बोरहोल करने की अभी तक कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। तो जिस दिन हम जहाँ अर्थक्वेक का उद्गम स्थान है वहाँ पर जाकर ड्रिल कर अगर हम उस दिन इंस्ट्रूमेंट लगा पाए डिफरेंट कि वहाँ पर अर्थक्वेक आने से पहले और जब अर्थक्वेक आता है तब क्या चेंजेस होते हैं, वो अगर हम पता लगा पाए एग्जैक्टली, उसके बाद हम कुछ मॉडलिंग करके पता लगा सकते हैं कि भूकंप कब आएगा, यहाँ पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी स्टोर हो रही है और कब भूकंप आएगा। तो जब तक ये काम नहीं हो सकता तब तक हम भूकंप का भविष्यवाणी करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारी जो मापने की क्षमता है वो बढ़ गई है, ठीक है। आज से लगभग अगर हम 10 से 15 साल पहले की बात करें तो हमारे पूरे इंडिया में स्टेशन हुआ करते थे 60 से 70 स्टेशन धरती का मापने के। तो उससे क्या होता था कि हम जितने भी छोटे छोटे भूकंप है 2 से 3 मैग्नीट्यूड के वो मिस करते थे, क्योंकि हमारे पास वहाँ स्टेशन भी नहीं होता था। अभी आप पिछले 10 साल में इतनी तरक्की हुई है कि हमने बहुत स्टेशन लगाए हैं। तो अभी हमारे पास जो नेशनल नेटवर्क है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को ऑपरेट करता है, उसमें लगभग हमारे पास 150 स्टेशन हो गए हैं पूरे इंडिया में। तो हमने कोने कोने में इंडिया के स्टेशन लगाए हैं। इससे क्या होता है कि आपके पास छोटा सा भी भूकंप आता है तो वो मेजर होता है और वो फील होता है और वो मीडिया में चला जाता है। और दूसरा उसका कारण ये है कि पिछले 8-10 साल में कुछ 2-3 ऐसे बड़े बड़े भूकंप आए हैं कि पब्लिक में उसकी जागरूकता काफी बढ़ गई है, क्योंकि कि मतलब कि भूकंप क्या होता है, क्यों आता है, क्या होता है। मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी इतना ये रन होता है, अब आदमी को जानकारी भी काफी मिल रही है। तो इसलिए अभी हम लोग भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं कि छोटा सा भी भूकंप आता है तो हम एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं। तो ये कारण है, भूकंप जितने पहले आते थे लगभग उनकी फ्रिक्वेंसी आज भी उतनी है। अब सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि हमारे मापने के यंत्र और उनके नंबर ऑफ यंत्र जो है वो क्षमता हमारी बढ़ गई है। हमारे इंस्ट्रूमेंट इतने सेंसिटिव हो गए हैं कि वो छोटे से छोटे भूकंप को भी माप सकते हैं। ये उसका मेजर कारण है। So that's all the news and scoops I have for you today. This is your newsman Rudrashish Kanjilal signing off from the 100th episode of Clear Cut. Today's episode was scripted by Ankita and produced by Lalit. Have a wonderful day ahead and keep listening to ABP Live podcasts. This is an ABP Life podcast.